Question number 2, state functions of central bank. So first function हमने पढ़ा issue of currency notes. RBI is also called as bank of issue. It has monopoly to print and issue currency notes except 1 rupee note and coins which are issued by Ministry of Finance. ये objective के लिए important कि पैसा कौन इशू करता है करेंसी नोट्स central bank, but 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance. So 1 rupee में ध्यान रखना वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती है. जो कॉइन्स होते हैं, नोट्स तो अभी दिखते ही बहुत कम, जो कॉइन्स होते हैं दैट आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Second, RBI maintains minimum rupees 200 crores reserve. उतना रिजर्व रखना जरूरी है. Rupees 115 crore in gold. Rupees 85 crore in government securities. Three basic principles should be followed in issue of currency notes. See, RBI is called as bank of issue. वही currency issue करती है except 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance. तो issue करते वक्त वो क्या देखेगी? Uniformity. Then you have security. Then you have elasticity. The main advantage, uniformity, security, elasticity. Uniformity क्या? एक जैसा शेप साइज सब सेम होना चाहिए उस नोट्स का. सिक्योरिटी होनी चाहिए. एंड इलास्टिसिटी ability to change. Main advantages for monopoly of note issue by central government are uniformity, distinctive prestige as notes are issued by single bank. एक बैंक इशू कर रही है सारे नोट्स, सो उस बैंक की प्रेस्टीज वो होगी दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनी अदर. सो डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज एज नोट्स आर इशूड बाय अ सिंगल बैंक. अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ ओवर इशू ऑफ करेंसी नोट्स. सारी इशू की पावर एक ही बैंक के पास है, दैट इज सेंट्रल बैंक. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो ओवर इशू ऑफ करेंसी नोट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कम होगी. Creates confidence among people. So this was the first point about issue of currency notes. We will continue in the next video, and this is an exam ka question.